Pro-Khalistan leader Amritpal Singh gave a 1-hour ultimatum to the Punjab government, claiming, and I quote him, that the FIR has been registered only with a political motive. If they do not cancel the FIR in 1 hour, the administration will be responsible for whatever happens next. They think we can't do anything, so this show of strength was necessary. This is the claim coming from Amritpal Singh. He's issued a direct ultimatum to the Bhagwant Mann Sarkar in the state of Punjab. This is over an FIR that's been filed against him for several remarks that have been made that are seditious in nature, where he's advocated the cause for Khalistan, and there were thousands of protesters who showed solidarity in his favor outside the police station where this FIR had been lodged. Let me go across to Gurpreet for more on this. Gurpreet, it appears like the situation on the ground there is quite sensitive. Tell us about the current atmosphere around the Ajnala police station where this FIR was lodged. Well, both the side, whether it's the police side or the protester side, they are sitting there in the police station. They have been demanding either by Amritpal, he has already made this very clear, either the police should arrest him, or the person who is close to him, he has been arrested by the police, he should be immediately released. So they have already given a time to the police department. They are saying that they will be sitting here, and as of now, what we have seen and what we can understand, that all the protesters, they are sitting inside holding a protest against the government, and they are very adamant. They are saying they are not going to vacate this place till the time the government is not going to take decision in their favor. So as of now, in the present situation, both the sides, whether the police side and protester side, they are adamant, and the police is also trying to mull and trying to talk to the top officer to understand what is the solution for this thing. But as of now, there is a silent protest, peaceful protest, which is going on inside the police station of Ajnala in Amritsar, where these protesters, they have been demanding immediate release of the person who has been arrested recently by the Punjab police. And this is almost like trying to hold the administration hostage. In fact, we have Manjinder Singh Sirsa joining us for more on this of the BJP. Mr. Sirsa, Punjab की situation के बारे में हमें जरा कहिए, because the person in question here is a pro-Khalistan sympathizer, Amritpal Singh, और हजारों की तायनात में वहां पे प्रोटेस्टर्स मौजूद हुए हैं अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर, ये कहने के लिए कि अगर आप 1 घंटे के अंदर इस FIR को विड्रॉ नहीं करते तो एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, जो भी होगा उसके लिए। देखो, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये आम आदमी पार्टी खुद करा रही है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बैठ के इसको मॉनिटर कर रहे हैं। दिस इज अ वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी। इसी तरह का इंदिरा मॉडल है। इसी तरह इंदिरा गांधी ने 1984 में 80 के दशक में सब कुछ किया था। पहले पंजाब के हालातों को बिगड़ने दिया, जिसको उकसाया गया, फिर लोगों को मरवाया गया, और फिर ये कहा कि देश में मैंने पंजाब का आतंकवाद खत्म किया है, सिखों को मारा, इसलिए मुझे वोट दो। तो फिर देश में सत्ता हासिल की। अरविंद केजरीवाल ने वही एक मॉडल डिजाइन किया है कि मैं पंजाब के हालात पहले बिगाड़ूंगा, फिर इनको मारूंगा, और फिर देश में जाके वोट मांगूंगा इस नाम से। तो ये बहुत ही खतरनाक एक वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन ये जो डिजाइन है, मॉडल ऑपरेंडी है, ये देश को भी नुकसानेगी और पंजाब को तो तबाह कर देगी। इसलिए आप देखिए, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 2 लोग इतने भारी हो जाएं कि पंजाब पुलिस जैसी भी सक्षम पुलिस है वो किसी को जाके हैंडल ना कर सके। ऐसा नहीं है, जानबूझकर किया जा रहा है। और आप देखना, कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि पुलिस चाह रही है, पंजाब सरकार उनसे करवा रही है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पुलिस से ये सब कुछ करवा रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं करना, इनको और बढ़ने दो और तेजी से आगे होने दो। जितना आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम जाके इनको काबू करके देश से वोट मांगेंगे कि देखो जी, हमने तो इनको मारा है, जेलों में डाला, हमें वोट डाला। सिरसा जी, तो आपका प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? क्या पंजाब पुलिस को करना क्या चाहिए? शुड दे टेक अमृतपाल सिंह इनटू कस्टडी? शुड दे अरेस्ट हिम? नहीं, ऐसी सिचुएशन ही नहीं आ सकती ना, जब आपको पता है सब कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। आप देखिए, पंजाब में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं वो पंजाब पुलिस की कंसेंट से हुए हैं। अब जैसे उन्होंने कल अनाउंस किया था, तो उनको घर ही अपना हाउस में हाउस अरेस्ट करते, 2 घंटों तक उनको घर बिठाते तो बात खत्म थी। लेकिन ये खुद नहीं करेंगे, ये जानबूझकर चाहते हैं कि ऐसे हालात बने, बिगड़े, पुलिस के साथ झड़पें हों और उसके बाद ये कोई कदम उठाएं। वरना ऐसा नहीं होता। आप भी समझते हैं कि कोई भी स्टेट पुलिस, कोई भी स्टेट इतना कमजोर नहीं होता कि वो अपने एप्रोप्रिएट जो है वो प्रिकॉशंस ना ले सके, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो।
ये जानबूझकर करवा रहे हैं सब कुछ। और एक और सवाल सर आपसे, क्योंकि कुछ देर पहले हमने आपके पंजाब के एक कॉलीग मिस्टर हरजीत सिंह ग्रेवाल से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये माहौल फैल रहा है पंजाब में, इट रिमाइंड्स हिम ऑफ द डार्क डेज ऑफ द 80s। आप क्या उस बात से सहमत हैं? वेल डिजाइंड एक मॉडस ऑपरेंडी है जो बिल्कुल 1980s के तरीके से डिजाइन की गई है। तब कांग्रेस ने इसी तरह यही डिजाइन बनाया था और वही डिजाइन पे अब अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। वो उन्हीं का मॉडल है। अब अरविंद केजरीवाल भी उसी मॉडल पे काम कर रहे हैं जो 1980 में कांग्रेस ने मॉडल अडॉप्ट किया था। ओके, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर सिरसा। सुखजिंदर सिंह रंधावा जी इज जॉइनिंग अस एज वेल। ही इज अ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। मिस्टर रंधावा, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। हाउ डू यू सी द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड सर? ये जो अजनाला में हो रहा है, we'll come back to Mr. Randhawa in just a short while. We have Mr. Arshdeep Singh of the Shiromani Akali Dal with us on the phone line. Mr. Singh, how do you respond to the situation that's currently prevailing in Ajnala? It's quite a sensitive situation where a pro-Khalistan sympathizer has managed to draw thousands of people in solidarity with him. How do you see the situation on the ground? देखिए, हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी है, इसकी लॉ एंड ऑर्डर पे जो पकड़ है पंजाब में, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। और आज पंजाब में बिल्कुल ही एक अनार्किस्ट सिस्टम जो फैल चुका है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और दूसरी तरफ भगवंत मान साहब आज इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं पंजाब में। तो मैं तो भगवंत मान से सीधा सवाल करता हूं कि अगर पंजाब में कानून का ये हाल है, अगर हमारे पुलिस स्टेशन अंडर अटैक हैं, अगर यहाँ पे पुलिस स्टेशन पे रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो रहा है और पुलिस हेडक्वार्टर पे रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स को क्या भरोसा दिला रहे हैं? वो पंजाब में क्या इन्वेस्ट करेंगे आके? अगर सेम डे आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हो और सेम डे आपके पंजाब में ये हालात हैं, तो इन हालात के लिए भगवंत मान जिम्मेदार हैं, केजरीवाल जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हें कानून के बारे में कोई इल्म ही नहीं है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ इल्म ही नहीं है। और पंजाब को लाके इन्होंने फिर उसी दौर में खड़ा कर दिया है जहां से बड़ी मुश्किल से पंजाब बाहर आया था। और पंजाब में पीस और कम्युनल हार्मनी जो इतने सालों की श्रोमणी अकाली दल की मेहनत थी पंजाब को स्टैंड कराने में, इन्होंने बर्बादी की तरफ पंजाब को धकेल दिया। Okay, thank you, Mr. Arshdeep Singh. Let me go back once again to Mr. Sukhjinder Singh Randhawa, the former Deputy Chief Minister of the state of Punjab. Mr. Randhawa, what do you have to say about the situation on the ground where a person like Amritpal Singh is able to hold the administration hostage? पिछले 5-6 महीने से अमृतपाल जो कर रहा है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल इग्नोर कर रही है इस बात को। और जो 80s में हुआ था वो दोबारा पंजाब में नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए और जो खालिस्तान और जो और नारे लगते हैं उनको बंद करना चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये बॉर्डर स्टेट है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो पहले हुई। तो मेरे ख्याल में जो इनके नारे हैं, जब जो बातें कर रहे हैं, इमीडिएटली इनके ऊपर एक्शन आना चाहिए। और साथ ही पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिस निकाला था, उसमें कहा था कि कोई भी ओपनली वेपन्स लेकर नहीं घूम सकता। वेपन्स बंद कर दिए गए थे। लोगों के FIR भी हुई जिनकी उनके ऊपर कोई फोटोग्राफी आई। तो ये एक अमृतपाल ऐसा आदमी है कि उसके साथ ओपनली वेपन्स लेकर घूम रहे हैं और गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये वेपन्स लाइसेंसी हैं या कौन सी हैं। इतनी गवर्नमेंट डर गई है और पता नहीं क्या कर रहे हैं वो। जो आज आप सबसे बड़ी बात देखिए, आज पंजाब में इन्वेस्टमेंट जो समिट हो रही है उसी दिन ये खालिस्तान और दूसरे नारे जो आप कह रहे हैं लगा रहे हैं। तो जो पहले इन्वेस्टर पंजाब में है, जो इन्वेस्टर वो आप घबराए बैठे हैं कि आप पंजाब छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे। आपने देखा होगा कि यूपी में जाकर मीटिंग कर रहे थे। तो आज जो आए हैं वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे कि पंजाब में ऐसे माहौल में कोई काम करेगा? ये बहुत बुरी बात है और पंजाब को नुकसान करने वाली। इमीडिएटली उसके ऊपर CM को मीटिंग लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो ऐसे एलिमेंट है उनके साथ कैसे डील करना है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मिस्टर रंधावा। लेट मी टेक दिस बैक टू गुरप्रीत, who's been monitoring the situation on the ground very closely. Gurpreet, what does it say about a man who threatens the administration by saying that if you do not withdraw the FIR that's been lodged within a space of an hour, then he'll not be responsible for anything that might happen on the ground? Isn't that an incitement?
Well, they have their own point. They are saying that FIR has been registered without investigating the matter properly, and the way this arrest has been made, that is not acceptable at all. And he says his name has already been cropped up in the police investigation, and that's why he has come along with his followers here. He says that till the time the government and administration is not going to take any decision, that all the followers as well as they will be sitting in the police station, and they want, if either the police should arrest him or the police should release the person who has already been arrested, because that is the demand, and that's why they are sitting here. So if we can talk about their perspective, they are talking about their perspective. They are saying that FIR has been lodged without confirming the facts, and the way this FIR has been registered, that should not be accepted. And for that, he has already said if they want to arrest him, he has already come to the police station, they can arrest. But as of now, we can see that the peaceful protest is going on in the police station of Ajnala, where that all the protesters they are sitting, and they have already given an ultimatum to the state government saying that immediately they should decide, and after that they will chalk out the next strategy. So let's see how the administration as well as the local police is going to deal with this situation. Absolutely, Gurpreet. You actually had the opportunity to speak to Amritpal Singh. You spoke exclusively with him earlier this morning. He not only threatened the Home Minister once again, but said that Khalistan is his right. Let's listen into that conversation between Gurpreet and Amritpal Singh. Why do you think Khalistan is a bad thing? In a democracy, we have right to self-determine. We have right to, say that we want a separate country in peaceful manner. I didn't say in anything. Amit Shah said he will crush the Khalistan movement. His statement is anti-democratic. There is no violent movement going on. There is an elected MP official who runs campaign for Khalistan. He was elected from Sangrur. So when Amit Shah, being a home minister of the country, says he will crush the movement, I didn't say that. I didn't threat him. I said welcome. I said the consequences, what happened when Indira Gandhi did the same thing. It's not about just Indira Gandhi's murder. The 10 years long period of militancy, and Sikh youth is still in unrest. They are in unrest. They want to do something. Going to form a Khalistan in peaceful manner is nothing a wrong thing. I am being threatened by a home minister for asking something that's my democratic right. So that was Amritpal Singh in conversation with our correspondent Gurpreet Singh Cheena earlier this morning, where Amritpal once again reiterated his commitment to what he describes as a cause for Khalistan, clearly expressing separatist sentiments as well as sympathies, and also daring the dispensation, not just in Punjab but also at the centre, to act against him. He is of course also reminded about the goings on in the state of Punjab when Indira Gandhi was the Prime Minister in the 1980s as well, and there are thousands of his supporters who've now gathered in Ajnala at the police station where an FIR has been lodged, trying to show solidarity with him. Let me go back to Gurpreet. Gurpreet, you spoke to Amritpal Singh. There was an armed entourage moving with him. There were people brandishing guns and had the bullets alongside their shoulders. What does this all indicate? The fact that this is happening so brazenly and so openly in the state of Punjab, which unfortunately has had a history of separatism during the dark days of the 80s. Well, that is the police functioning, and that is the police how to deal with the situation. We have seen immediately when they had come there, the police had put the barricade, but within a few minutes, because with a lot of aggression, they are saying this is the FIR which has been registered fake, and they are being implicated for that. So we have seen immediately that the police was not able to stand there, and all the protesters, they had gone inside and they are sitting inside the police station. They are saying very clearly and categorically, they have stated to the administration, local administration also, till the time the government is not going to take any decision. Either they have two demands. One, they want that either they can arrest him, or the person who has already been arrested, he should be immediately released. So let's see that how the government is going to tackle it.
We should wait and see as to how the government actually plans to tackle it. Gurpreet, there was also a press conference a couple of days ago that had been chaired by Bhagwant Mann. This was following the cabinet meeting that had been held in the state of Punjab. There were certain pointed questions that were also asked to Mr. Mann about the actions and statements of Mr. Amritpal Singh. If you could just take our viewers through what Bhagwant Mann said in response to those questions about Amritpal. Well, yes, of course. We have seen when the Chief Minister was confronted by some of the journalists, he was, instead of giving a direct answer on this thing, he had diverted the question from there. He was talking about that a lot of improvement and development which they have done. He was talking about that. But yes, of course, it seems that the government has not taken it very, very seriously. And that could be one of the reasons why this has not taken it very, very seriously, and that could be one of the reasons why this whole chaos has taken place here in the police station Ajnala. So I'll request my VJ to show all the pictures here on the ground, what is happening at this point of time. We can see that a huge number of followers, they have already been reached here and they have been demanding very clearly, and as of now we have seen that peaceful protest is going on. They are saying that till the time the state government is not going to take any decision in their favor, they will continue this protest here. So all the people, they are sitting here, they are waiting for that decision, what the administration is going to take decision on this. And what are the sources from within the Punjab government telling you, Gurpreet, about the likely action to be taken or not to be taken on the part of the ruling dispensation in the state of Punjab? Because ultimately there will also be pressure on the Bhagwant Mann government. 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਖਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੱਡਦੇ ਭਾਈ, ਚਲੋ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ ਯਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਹਵੇਲੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਅੱਜ। ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਝੜਪ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਾੜੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੇਟ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਤੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ that is not the type of story should not be run, and this type of story should not be taken by the media. ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ cancellation report is going to be filed within the 24 hours, and within the 24 hours after that we will bring Tufan Singh here, and after that we will take it there. So we have learned that a lot of Sikhs are being stopped on the various way. So we also appeal that Sangat want to come here. ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੇਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। So our main things, they are being detained and they are being stopped on the way. ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ even the police detained some of the things at the various places. The Gurmeet Singh and Basant Singh, they are the two main Sikhs. They are being not allowed to come here. So here Diwan will be ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਲਾ ਵੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਿਆਨ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। Amit Shah ne on Home Minister, media has twisted the statement. I did not ask all these things. I told them this framework had done Indira and this Indira Gandhi. That murder is not facing. Six are being also killed at that time. More than 1,000 Sikhs were being killed at that time. ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ if Home Minister can say that Hindu Rashtra people, if somebody says that we want to make Hindu Rashtra, he will be crushed. So I can see that whether he will remain the Home Minister or not. ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ I request Sikhs, those are in the BJP, they should also raise their voice. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ। Within 24 ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਸਿੰਘ ਆਊਗਾ within 24 hours we want that Tufan Singh or a person, he should be released immediately. ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ So the police will say that this is the wrong and false case which has been registered, and once they are going to cancel after that. ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ। ਭੰਨ ਤੋੜ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। We haven't broken anything, but the forces they had broken. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜੇ, ਭਾਗਦੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। The cops who got injured, they got because there was a confrontation. There was no confrontation if they had allowed us to come peacefully. So ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ। in case in future the false cases should not be registered. ਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ that these false cases cannot stop this peaceful moment. ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੰਗਦੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲਈ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਬੰਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਵਾਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਾਂਗੇ ਸਿਰ ਵਾਰ ਕੇ।